वेलकम टू आवर प्रमिड़ा यूपीएससी ओपीएससी पाथ चैनल। आज आम डिस्कसन करवा किभली आउ 60 दिन रहा परीक्षा आम किभली आम एसे राइटिंग करवा फिलोसफिकल एसे पूर्व वर्ष जमी क्वेश्चन आसी यूपीएससी पैटर्न अनुसार तो आपण से अनुसार प्रिपरेशन करेंगे। देखो व्हाई फिलोसफिकल एसे मैटर अंडरस्टैंडिंग द स्पेसिफिक competency evaluated by examination through philosophical promote test depth of thought and maturity, evaluate analytical and critical thinking, accelerated create clarity of expression, majority ability to connect idea with governance and society, reward original and balancing reasoning। नेक्स्ट होची डिस्कशन करवा ना होची किभली माने होची देखंतु व्हाई फिलोसफिकल एसे मैटर दार्शनिक प्रबंध यूपीएससी और ओएस पाई काहेकि गुरुत्वपूर्ण ना जानिबा। दार्शनिक प्रबंध केवल आपण को ज्ञान को नुहे बरं आपण चिंताधारा विश्लेषण क्षमता नैतिक दृष्टिभंगी और व्यक्तित्व को परीक्षा करे। जड़े भविष्य में प्रशासक भाव आपण जटिल समस्या को किपरि बुझंती एवं संतुलित समाधान दियंती ताहा एही प्रबंधर प्रतिफलित होता है। दार्शनिक प्रबंधर गुरुत्व ना होची चिंतन और विश्लेषणात्मक क्षमतार परीक्षा। तापर होची दार्शनिक विषयटी को सठिक किंवा भूल उत्तर नଥାଏ। एठारे आपणक जुक्ति विश्लेषण और संतुलित चिंताधारा को जो बैलेंस चिंताधारा को मूल्यांकन करा जाए। प्रशासनिक दक्षतार परिचय जड़े आईएएस ओएस अधिकारी को भिन्न स्वार्थ मूल्य मध्य संतुलन रक्षा करी निजर निष्पत्ति नेबा को पड़े। दार्शनिक प्रबंध सही क्षमता को प्रकाश करे। बुझेला ना। 3 होची नैतिक मूल्यबोधर परीक्षा। यही प्रबंध रे न्याय समानता स्वाधीनता मानविकता दायित्व सहानुभूति पर मूल्यबोधर आलोचना हुए। मौलिक चिंताधारार विकास केवल तथ्य लिखिले भल नंबर मिले नहीं। निजस्व स्वाधीन चिंता उदाहरण और जुक्ति उपस्थापन करिवो। बुझेला ना। भाषा और उपस्थापन कौशल जटिल विषय को किभली सरल स्पष्ट और प्रभाव भाव लिखि पारिबो क्षमता यही प्रबंध परीक्षा करा जाए। दार्शनिक प्रबंध किपरि लिखिबे ना होची प्रथमे मूल विषयटी को अर्थटी को बुझंतु परे होची मुख्य शब्द गुडी को अर्थ स्पष्ट करंतु। बुझिला ना। प्रथमे कोन ना होची विषयर मूल अर्थ को बुझंतु मुख्य शब्द गुडी को अर्थ सृष्टि करंतु। सामाजिक आर्थिक राजनीतिक वैज्ञानिक परिवेशीय और अंतर्जातीय दृष्टिकोण विश्लेषण करंतु। उदाहरण घटना उक्ति। बुझिला ना। उक्ति संवैधानिक मूल्यबोध को उल्लेख करंतु। संतुलित और सकारात्मक निषेध दियंतु। तापर होची ओएस और आईएएस रे आसुथिबा किछि साधारण दार्शनिक वैशिष्ट्य एटा होची स्वाधीनता और दायित्व। बुझिला ना। न्याय और समानता वैज्ञानिक और विज्ञान और मानविकता प्रजुक्ति और नैतिकता शिक्षा और चरित्र विकास और परिवेश व्यक्ति और समाज गणतंत्र और नागरिक भल मार्क केमिति पाइबे। फैक्ट इंटरेस्ट द एग्जामिनर बट आइडिया लॉजिक एंड बैलेंस थिंकिंग सिक्योर हाई मार्क। बुझिला ना। फैक्ट होची इंप्रेस करिवो एग्जामिनर को बट आइडिया लॉजिक एंड बैलेंस थिंकिंग सिक्योर हाई मार्क। बुझिला ना। तथ्य परीक्षा को प्रभावित करे किंतु गभीर चिंताधारा और जुक्तिपूर्ण संतुलित दृष्टिकोण ही उच्च नंबर आनी थाए। दार्शनिक प्रबंधर उद्देश्य आपण केते जानिचंती ताहा नुहे बरं आपण किपरि चिंता करंती ताहा प्रकाश करबा। यूपीएससी ओएस परि परीक्षा रे एही गुण जे सफल प्रशासक पई अत्यंत आवश्यक। बुझिला ना। ताले होची मु जदी देखंतु एही सब विषय मु जदी कहिबी ना होची फिलोसफिकल एसे मैटर इन यूपीएससी सिविल सर्विस मेंस बिकॉज़ दिस they state your personality, depth of thought and ability reason, not merely your knowledge. Unless GS paper they are बुझिला ना। GS paper they are knowledge unlike GS paper there is no fixed syllabus or factual answer. The answer evaluate how you think, analyze and the express idea. अब होची philosophical essay are important in UPSC। তাহলে होची philosophical essay are important in philosophical। তাহলে होची test analytic thinking। Philosophical topic require interpreted the abstract idea and thinking them from multiple perspectives. Technology can empower women but only society can ensure dignity। सही बेला माने टेस्ट और एनालिटिक टेक्निक करबा पई पड़बो। असेस द बैलेंस जजमेंट सब बेले बैलेंस जजमेंट को मूल्यांकन करबा ना होची सिविल सर्वेंट रेगुलेट आइडिया विथ कॉम्पिटिटिव वैल्यू सच एज डेवलपमेंट एनवायरनमेंट और सिक्योरिटी वर्सेस लिबर्टी। तापर रहबो फिलोसॉफिकल एसे सो हाउ वेदर यू कैन बैलेंस सच व्यू पॉइंट reflect ethical and constitutional values, them often related to justice, equality, freedom, cooperation, democracy, the freedom of them often related to justice, equality, freedom, compassion, democracy, and humanity. Linking these ideas with constitution, Gandhian philosophy, Ambedkar, Vivekananda, or Indian tradition, then the essay evaluate origin. The best essay are not considered the fact. They demonstrated independent thinking, supported by example from history, society, science, literature, and current affairs.
So communication skill. A good civil servant should explain complex idea into simple language. A good civil servant should explain complex idea in simple language. Philosophical essay test clarity, cohesion, and logical flow. How to approach philosophical essay, understanding the idea before writing, key difference, explore different dimension, ethical, social, ତାପରେ ହେଉଛି economic and political, technology, historical and international. ତାପରେ ହେଉଛି use example, anecdote, quotation and case study. Maintain a balanced tone with a hopeful, solution oriented. Conclusion. Common philosophical theme in UPSC. Freedom of justice. ତାପରେ ହେଉଛି freedom of, ଦେଖ ନା ହେଉଛି freedom of justice ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଏ, ବୁଝିଲା ନା? ତାପରେ ହେଉଛି ଦେଖିବା ହେଉଛି ତାପରେ understand the central idea, justice and equality. Common philosophical theme in UPSC. ଦେଖିବା freedom and responsibility, justice and equality, power and moral, science and humanity, technology, ethics, happiness and success. ତାପରେ ହେଉଛି education and character, democracy and citizen, individual versus society, development and security. Strategically scoring strategy କ'ଣ କଲେ scoring ହେବ ନା ହେଉଛି introduction 10%, anecdote, quotation or storytelling, introduce the theme, ବୁଝିଲା ନା? Interpretation, explain the statement and define the keyword, ବୁଝିଲା ନା? ତାହେଲେ ହେଉଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଉଛି କ'ଣ କରିବେ ନା ହେଉଛି ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନଟା କେମିତି ଲେଖିଲେ ନା anecdote, quotation or storytelling, ବୁଝିଲା? storytelling ରେ ଲେଖିପାରିବେ। ତାପରେ ହେଉଛି ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟେସନ ନା ହେଉଛି ଯୋଉଟା ଦେଇଥିବ explain the statement and define keyword, ବୁଝିଲା? keyword ଗୁଡ଼ିକ define କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। multi dimensional analysis, ବୁଝିଲା? multi dimensional analysis କରିବା ନା ହେଉଛି 60% ସେଇଥିରୁ ଲେଖାଯିବ। ନା ହେଉଛି discuss from diverse perspective with example, ବୁଝିଲା ନା? କାଉଣ୍ଟର ଭ୍ୟୁ ପାଇଁ ଲେଖିପାରିବେ, ନା ହେଉଛି କାଉଣ୍ଟର ଭ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରିବେ। ତାପରେ ହେଉଛି 10%, ଆଉ ହେଉଛି କନକ୍ଲୁଜନ ଲେଖିପାରିବେ 10%। ନା ହେଉଛି କାଉଣ୍ଟରଟାକୁ ନାଇଁ ମଲ୍ଟି ଡାଇମେନସନ କେମିତି ଲେଖେ discuss from diverse perspective with example, ବୁଝିଲା ନା? କାଉଣ୍ଟର ଭ୍ୟୁଟା ସିଏ ହେଉଛି 10%, ମଲ୍ଟି ଡାଇମେନସନାଲ ହେଉଛି 60%, କାଉଣ୍ଟର ଭ୍ୟୁଟା ହେଉଛି 10%। ତାପରେ ହେଉଛି analyze limitation or opposing word, ବୁଝିଲା ନା? conclusion 100 optimist, balance and align with historical, with optimistic, balance and align with constitutional value, ବୁଝିଲା ନା? ତାହେଲେ ହେଉଛି ଏଇଭଳିଆ ଲେଖିଲେ ହେଉଛି କନକ୍ଲୁଜନଟା କେମିତି ଲେଖିବେ? ଅପ୍ଟିମିଷ୍ଟିକ ହେଇଥିବା ଦରକାର, ବାଲାନ୍ସ ହେଇଥିବା ଦରକାର, ଆଲାଇନ୍ ୱିଥ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ଭ୍ୟାଲୁ ସହିତ ଆଲାଇନ୍ ମଧ୍ୟ କରୁଥିବା ଦରକାର, ବୁଝିହେଲା ନା? ତାହେଲେ ଦେଖିବା ନା ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ରିକର୍ଡ ଦ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟପିକ, ବୁଝିହେଲା ନା? ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଉଛି ରିକର୍ଡ କରିବେ, ତାପରେ ହେଉଛି ନା ହେଉଛି ଲେଖିବେ, ବୁଝିହେଲା? ଟପିକ ଦ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଟୁ ବିଫୋର ପୁଟିଂ ପେନ୍ ପେପର। ତାପରେ ହେଉଛି ମାନେ ଗୋଟେ ପେନ୍ ପେପର ହେଉଛି ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରାଲ ବନେଇଲା ବେଳେ କ'ଣ କରିବେ ନା ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଦ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଆଇଡିଆ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କରିବେ। ହିଡେନ୍ ମେସେଜ କ'ଣ ଅଛି ତାକୁ ଦେଖିବେ। ନା ହେଉଛି ଫିଲୋସଫିକାଲ ଇସ୍ୟୁ, ହ୍ୱାଟ ଆର ଦ ଫିଲୋସଫିକାଲ ଇସ୍ୟୁ ରାଇଜ ବର୍ଡର ସିଗ୍ନିଫିକାନ୍ସ, ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଦ ବର୍ଡର ସିଗ୍ନିଫିକାନ୍ସ, ବୁଝିଲା? ଏଇ ସବୁ ଦେଖିବେ। ଥିଙ୍କ ବିଫୋର ଦ ଲିଟରାଲି ମିନିଂ, ବୁଝିଲା ନା? ଥିଙ୍କ ଦ ବିଫୋର ଦ ଲିଟରାଲି ମିନିଂ ମାନେ ହେଉଛି ମୁଭିଂ ଫ୍ରମ କାଉଣ୍ଟର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଟୁ ଆବଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ବିଫୋର ଦ ଏକ୍ସପ୍ଲୋରେସନ, ବୁଝିଲା ନା? ହ୍ୟୁମାନ କ୍ୟାରେକ୍ଟର, ଲିଡରସିପ, ବୁଝିଲା? ହ୍ୟୁମାନ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ହେଉଛି ଫୋକସ ଅନ୍ ଇଣ୍ଟରନେଟ and more construction, leadership ହେଉଛି examine the role, guidance and influence, ethics ହେଉଛି ନା ହେଉଛି before foundation normal moral people। ତାପରେ governance ହେଉଛି analyze କ'ଣ ହେବ ନା? analyze ହେଉଛି କ'ଣ ହେବ ନା? ହେଉଛି explore the fundamental moral duty, ବୁଝିଲା ନା? ତାପରେ ଗଭର୍ନାନ୍ସ ରେ କ'ଣ ଲେଖିନା? ଆନାଲାଇଜ ଦ ସିଷ୍ଟମାଟିକ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଓଭରସାଇଟ୍, ରେଜିଲିଏନ୍ସ ହେଉଛି ଡିସ୍କସ ଦ ଆବିଲିଟି, ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ ପ୍ରେସର, ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ ଅନ୍ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଆକାଉଣ୍ଟବିଲିଟି ଇନ୍ କଣ୍ଟେକ୍ସଟ, ବୁଝିଲା ନା? ତାହେଲେ ହେଉଛି think beyond the literary meaning in philosophical essay। ତାହେଲେ ଜାଣିବା ନା ହେଉଛି କ'ଣ ସବୁ ଅଛି, ବୁଝିଲା ନା? ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଏସେ
टॉपिक उपरे एबे आलोचना करिबा को एसे केमती आसुची से विषय डिस्कशन करिबा। प्रथमे कहबी सस्टेनेबल डेवलपमेंट रो होची गोटे होची एग्जांपल ना होची ना कोटेशन ना द अर्थ इज प्रोवाइड एनफ टू सैटिस्फाई एवरी मैन नीड्स बट नॉट एवरी मैन नीड्स कॉल्ड बाय महात्मा गांधी एथिक्स इन एडमिनिस्ट्रेशन माय मेसेज माय एडमिनिस्ट्रेट बुझला ना देखिबा ना होची आलोचना करिबा ना होची एथिक्स इन माय सस्टेनेबल डेवलपमेंट देखिबा होची द अर्थ प्रोवाइड एनफ टू सैटिस्फाई man's needs but not every man's needs ethics in administration my life is my message बुझला ना my life is my message good governance तब the best way to find yourself to lose yourself service of others तब होची social justice होची a nation greatness is measured by how treat its weakest member education reform ना होची literacy is no education women related ଯେତେବେଳେ question ଆସିବ ଆମେ କଣ କଣ ସବୁ କୋଟେସନ ୟୁଜ କରିପାରିବା ना होची देखंतु ना होची प्रथम गोटे कोटेशन यूज करिबा ना होची women is the champion of the man companion champion no women is the champion of the man gifted with equal mental capability ना होची women is the champion of companion of man women is companion of man gifted with equal mental capability by Mahatma Gandhi life is not complete between a man and woman it is a collaboration by David Fernandez तापर होची human rights are women's rights are human rights are women's rights are human rights called by Hillary Clinton बुझला ना तापर नेक्स्ट होची कोटेशन ऑन हेल्थ बुझला ना कोटेशन ऑन हेल्थ ऊपर आलोचना करबा तो इट इज देखिबा होची इट इज द हेल्थ is real wealth and not piece of gold and silver called by Mahatma Gandhi now it is the health that is real wealth and not piece of gold and silver by called Mahatma Gandhi every human being is author of own health and or disease बुझला every human being is author of his own health or disease health is the greatest of human being ताले गुटे से हमें आलोचना करबा होची सेटा होची एसर ना टेक्नोलॉजी कैन एम्पावर वुमेन and technology can empower women but only society can ensure dignity बुझला ना नहीं प्रथमे हमें कोन करबा ना होची हमें विभिन्न प्रकार डायग्राम बनेबा पय चेष्टा करियो बुझला ना मान स्ट्रक्चर बनेबा पय चेष्टा करबा स्ट्रक्चर बनै सारला परे ताको हमें आंसर रे परिणत करबा पय लिखबा पय चेष्टा करबा उचित बुझला ना ताले मु एबे कहबी केमती डायग्राम बनेबे प्रथम तो कहथिले जे ना होची अनोटेड किबा स्टोरी ऊपर गोटे लिखबा पय पड़िबो बा होची गोटे कोटेशन लिखबा पय पड़िबो एटी कोन वुमेन एम्पावरमेंट बा होची टेक्नोलॉजी वुमेन सहित टेक्नोलॉजी और सोसाइटी बुझला ना को कोटेशन देले हबो ना होची एटा देखो ना होची हमें देई परिबा वुमेन इज चैंपियन ऑफ मैन गिफ्टेड विथ इक्वल मेंटल कैपेबिलिटी बुझला ना भाई महात्मा गांधी ताको देई परिबा नचेत होची यत्र देखो संस्कृत ताको इंग्लिश रे लिखबा पय पड़िबो यत्र नार्यस्तु उच्चयन्ते रामन्ते तत्र देवता हला ताले when where women are respect divine reside बुझला ना ता माने होची एटा yes yet despite remarkable technology progress millions of humans continue to face discrimination violation and unequal opportunity technology has emerged a transformative force by expanding access of education healthcare finance service employment and justice however true empowerment extends beyond access to digital tools it requires dignity respect equality and freedom from discrimination value that only a progressive and inclusive society can guarantee तापरे ए सब लिखला परे कोन लिखबा ना इंट्रोडक्शन तापरे होची हम चेष्टा करबा ना होची एटा को बुझाइबा पय मत ना टेक्नोलॉजी कैन एम्पावर वुमेन बट ओनली सोसाइटी कैन एंश्योर एटा लिखा गला ना होची टेक्नोलॉजी आर एमर ए ट्रांसफर फोर्स बाय द एजुकेशन हेल्थ एटा तो लिखला परे तापरे नेक्स्ट मु कोन कहती ना होची डायमेंशन एटा 10% लिखलो और एटा को 10% लिखलो तापरे होची टेक्नोलॉजी एंड इंस्ट्रूमेंट ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट केमती होची टेक्नोलॉजी होची इंस्ट्रूमेंट ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट होची टेक्नोलॉजी आज significantly improve एटा तो हेडिंग देला किंतु होची हेडिंग न देई किना हमें लिखि पारिबा बुझला ना हेडिंग ताको एमती अंडरलाइन करबो नाही किछि करबा दरकार छले एमती लिखलो ना होची टेक्नोलॉजी आज
significant improve the lives of women across social and economic sphere ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ପଏଣ୍ଟ ନ ଦେଇକିନା ଆପଣ ଏଠି ଲେଖିଦେବ in education and knowledge perspective the internet has democratized learning through online platform digital classroom and educational application ଏମିତି ଲେଖିପାରିବ ବୁଝିହେଲା ନା ନାହିଁ ତାପରେ ହେଉଛି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଇପାରିବ rural girls can access quality education women prepare for competitive exam can study from home digital literacy reduce educational inequality एग्जाम्पल देते हैं दीक्षा स्वयं पीएम विद्या has expanded opportunity for women तापर होची इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस रे लिखि परिबो होची ना होची मु कहितले आपन माने जति लेखिले सेटा को पूरा होची डायनामिक भलिया लिखि परिबे बुझियला ना आज केमते डायनामिक भलिया लिखि परिबे ना होची मु कहितले जो डायमेंशन गुडा बुझियला इकोनॉमिकल पॉलिटिकल सोशल ए गुडा को ही लिखा होची एजुकेशनल हेल्थ रिलेटेड बुझियला ना ए गुडा को डायमेंशन लिखा होची तापर इन एठी दुई नंबर टाको सीधा सड़क को देखो एमती न लिखि इन इकोनॉमिक perspective digital technology have increased women participation in economy बुझियला ना तापर लिखि परिबा होची in e-commerce enable women entrepreneurs to reach wider market API and Johnson account facilitated inclusion self-help group use digital payment and online market Odisha mission shakti has empowered lakh of women through digital banking and entrepreneurship तापर होची healthcare access रे लिखि परिबा ना होची देखंतु या टू तो लिखि पाले तापर होची ए जो इकोनॉमिक डिपेंडेंस लिखि पाले जो चैलेंजेस भी लिखि परिबा ना होची हाउएवर आ गुटे पैराग्राफ हाउएवर women are not fully economic independent due to domestic violence बुझिला ना domestic violence तापर patriarchal society and other cause बुझिला ना but good example of now women are in economic field like Nita Ambani has good in women entrepreneurs बुझिला ना आखरी देई परबा women entrepreneurship रो देई परबा इकोनॉमिक रे जवन ग्रोथ करते ताको तापर होची in official position around 15 years निर्मला सीतारामन बुझिला निर्मला सीतारामन has posted in फाइनेंस मिनिस्टर एगुला लिखि परिबे देखो एटा पेज हला तापर होची एटा को पेज लिखबा तो एग्जांपल लिखि परिबे एगुला नीता मानि कहले ना होची निर्मला सीतारामन कहले सेमति करि के एठी गुटे देखो मु एटा गुटे पैराग्राफ लिखि दिनु गुटे पैराग्राफ बुझला ना एठी एई पैराग्राफ सहित लिखले एठी सल्ला एठी जो स्टार्ट करबा ना होची एटा को जो स्टार्ट करले एठी लिखि चले लिखले पूरा लिखि चला परे एटा या सहित एटा लिंक करूथबा बुझला ना ताहाले होची आपण माने निहाती फल मार्क पाइबे देखंतु हेल्थ एक्सेस रे भलो कथा गुडा को कहि देई परिबा तापरे होची चैलेंजेस कोन होची वुमेन्स रो हेल्थ एक्सेस रे कहि परिबा वर्तमान होची हमर रिसेंटली होची सर्जिकल कैंसर जेमति कि होची वुमेन्स मानकर इशू देखैछि बुझला ना तापरे एनीमिया इशू देखैछि मेनी चैलेंजेस तापरे होची वुमेन्स मानकर हेल्थ रे जहा भी चैलेंजेस देखिलो गोटे होची फास्ट लिखला होची telemedicine AI diagnostic and mobile health application improve women health care बुझला ना टेक्नोलॉजी कथा कहछि टेक्नोलॉजी रिलेटेड ही लिखि साला पर मैटरनिटी हेल्थ मॉनिटरिंग menstrual health awareness mental health counseling remote control एग्जांपल होछि ई संजीवनी आज रूरल women who doctor with traveling long distance political and societal participation social and medical has amplified women voice awareness campaign political participation digital activism me too movement बुझला ना एठी लिखि दवा ना होची however बाहुची but बुझला ना but लगे पारे however तो कर लगे थिला एठी कंजक्शन वर्ड but लगे पारे बुझला ना ताले होची देखंतु को वर्ड कंजक्शन word in essay यूज केमती करबा ना होची से विषय रे मु कहिबी बुझला ना देखंतु ना होची ना संयोजक वर्ड देखिल ना होची फर्स्टली सेकंडली थर्डली फाइनली बुझला क्रम में देखै बारिबा ना होची सब्सिक्वेंटली फाइनली बुझला एमती दर्शाई परबे ए वर्ड गुडा को मन रखंतु प्रपोज को उद्देश्य रे यूज करबो ना होची क्रम दर्शाइबा क्षेत्र रे केमती होजेबा ना फर्स्टली सेकंडली thirdly initially subsequently finally jog करबा हमने लिंकिंग वर्ड likewise बुझला ना सॉरी जॉग करबा माने होची more ever बुझला more ever तापर होची further more besides in addition additionally also बुझला ना जॉग करबा क्षेत्र रे आ गुटे होची
विपरीत मत विपरीत मत क्षेत्र में however माने opposite देबो nevertheless ना होची nonetheless बुझला ना on the contrary yet although एमती सब यूज करबा तुलना करले कंपैरिजन करले केमती करबा ना होची likewise similarly in the same way बुझला ना comparatively ए भला यूज करबा पार्थक्य जदि whereas while controversy तापर होची देबा होची ना कोन होची ना होची other hand तापर होची देबा हमर कोन ना होची since because कारण since because as owing to due to फलाफल ପାଇଁ होची therefore बुझला thus hence consequently as a result उदाहरण ପାଇଁ होची for example for instance such as to illustrate बुझला गुरुत्व देबा होची indeed certainly notably importantly शर्त ପାଇଁ होची ଆମେ यूज करबा unless provided that as long as स्वीकार करिया ପାଇଁ होची although even though granted and immediately सारांश ପାଇଁ यूज करबा in conclusion to conclude overall essential ultimate तापर होची इंडिया फास्टली moreover however for instance therefore ए सब आमे यूज करि परबा गोटे पैराग्राफ रे दुईट रु तीनिटी कंजक्शन रु अधिक व्यवहार करि परिबे करंतु नाही बुझला नै बारंबार and also both व्यवहार न करी moreover nevertheless consequently furthermore पर विभिन्न अल्टीमेट पर विभिन्न शब्द व्यवहार करंतु प्रत्येक पैराग्राफ पूर्व पैराग्राफ सह युक्ति संगत भाबरे जडित हेबा उचित लिंकिंग वर्ड सटीक भाबरे आपण बारंबार प्रबंध को परिपक्व सुसंगठित परिपक्व पई सहज पाठ करि थाय बुझला ना लिंकिंग वर्ड ता होची बहुत इम्पोर्टेंट ताकू मध्ये ध्यान देबा पई पडिबो बुझला ना तापर होची ई समझी माने has rural economic consequence without traveling long political तापर होची सोशल मीडिया has amplified women's voice बुझला ना political and awareness campaign politically तापर होची डिजिटल एक्टिविज्म तापर एग्जांपल देबा होची ना होची मी टू मूवमेंट बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अवेयरनेस प्रोग्राम चलेगा बुझला तापर होची हमें देखिबा होची ना होची पॉलिटिकल और सोशलिस्ट माने होची केमती ना होची वुमेन मान को रिजर्वेशन दिया जायछि 33% इन रिसेंटली लोकसभा एंड राज्यसभा एमएलए एमपी जो हेबा पई जाउतबा निर्वाचन बुझला नारी शक्ति अधिनियम तापर होची पंचायत राज रे 33 मानको वुमेन मान को दिया जायछि बुझला ना तापर होची आमे एठी गुटे कोन वर्ड यूज करबा ना होची कनेक्टिंग वर्ड यूज करबा कनेक्टिंग वर्ड ता होची केमती यूज करबा देखिबा नहीं विपरीत nonetheless बुझला nonetheless बुझला nonetheless माने होची nonetheless बुझला nonetheless माने होची मु कहबी यार होची विपरीत अर्थ बुझेबा ना होची women are getting in 33% in पंचायत राज but now seen पंचायतपति are ruling in the ग्राम पंचायत बुझला पंचायतपति माने कोन होची स्त्री पंचायत रे सरपंच थी किंतु स्वामी माने ताकू चलाउछंती एटा को भाजो पंचायतपति बुझेला नै एई भला बढ़िया एग्जांपल देखना होची आपन माने होची सबु डायमेंशन रे लिखि पारिबे बुझेला नै तुलना करिवे जेमति वर्ड होची लाइकवाइज सिमिलरली सेम इन द सेम वे कंपैरेटिवली बुझेला ना एमती सब लिखिबे स्टे एंड लीगल एम्पावरमेंट ताले होची टेक्नोलॉजी एनहांस वुमेन सिक्योरिटी ए सब लिखि पारिबे इमरजेंसी एसओसी एप्लीकेशन जीपीएस ट्रैकिंग साइबर कंप्लेन ऑनलाइन लीगल एड बुझेला ना सेफ्टी रिलेटेड होची रिसेंटली होची आरजे कर मेडिकल कॉलेज जो मेडिकल स्टूडेंट को सब लिखि पारिबे बुझेला ना आ वुमेन सिक्योरिटी रे होची खिलाफ हेतला होची रिसेंटली देखिबा होची ना होची कोन चामेली बोली जो पंचायत रो होची पुलिस माने ताको भलो व्यवहार करले नै सेटा भी से जहां भी करथाउ भूल होइथाउ कि ठीक हेइथाउ কিন্তু ताको सेमती व्यवहार कर नथला होची सरपंच को जेमती व्यवहार करले वुमेन सरपंच को बुझेला याको सब रिसेंटली एग्जांपल देई परिबे बुझेला तापर होची सिमिलरली आउ देई परिबा होची रिसेंटली होची वुमेन हॉकी प्लेयर इन गोइंग ऑन लैटिन रूम ट्रेन टू प्लेइंग to leading our Indian हॉकी टीम बुझिला हॉकी टीम रे खेलबा पई समान होची रे लैटिन डबारे रेलवे रे जाउतले एहा गोटे कोन हमन को हमें सिक्योरिटी देले कि नाही कारण कि एहा ऊपर होची हमें काम करिवार अछि ताको हमें बंचाइबार अछि से बेला लिखि पारे बुझि पालो why technology alone cannot ensure dignity काहे कि टेक्नोलॉजी होची cannot होची ensure dignity बुझिला ना dignity कोन पई होची टेक्नोलॉजी cannot ensure dignity बुझिला ना ताले होची लिखबा राइट टू प्राइवेसी बुझिला ना अंडर आर्टिकल 21 बुझिला ना provided the security of women in public places
but ବୁଝିଲା ଏମିତି ଲେଖିବେ but now seen it very rarely ବୁଝିଲା ନା ଏମିତି ସବୁ ଲେଖିବେ ବୁଝିଲା ନା ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଦେଇଦେବେ କୋଉଠି ସେମାନେ ଡିଗ୍ନିଟି ପାଇନାହାନ୍ତି ବୁଝିଲା ନା ଯେମିତି କି କହିବି ହଉଛି ରଶ୍ମିକା ମନ୍ଧାନା ରିସେଣ୍ଟଲି କଣ ହେଲା ନା ହଉଛି can't get ensure of the security during the video viral ବୁଝିଲା ନା ତାର ହଉଛି ପାଟ୍ରିକାଲ ମାଇଣ୍ଡସେଟ ଲେଖିପାରିବେ ନା ହଉଛି ପାଟ୍ରିକାଲ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି cannot erode deeply patriarchal belief ତାପରେ ହଉଛି ଲେଖିଲେ women continue to face domestic violence child marriage honor killing gender discrimination even educated family sometimes deny women equal opportunity digital divide ହେଇଛି ନା ହଉଛି technology it is unequally distributed according to various survey ତାପରେ ହଉଛି women are less likely to own smartphone rural women lawyer internet access ତାପରେ ହଉଛି ନା ହଉଛି technology can unintentionally widen inequality ତାପରେ ହଉଛି ଲେଖିପାରିବେ ହଉଛି non violence ମାନେ ହଉଛି technology has created a new threat women increasingly face cyber bullying online harassment deepfakes image identity theft cyber stalking instead of empowering women digital platform sometimes become space of exploitation ତାପରେ ହଉଛି workplace basis ବୁଝିଲା ନା workplace basis technology company themselves reflect gender equality women remain underrepresented in artificial intelligence STEM STEM research leadership position venture capital algorithm may reinforce gender stereotype through vast database technology cannot change human behavior a mobile phone cannot teach respect artificial intelligence cannot replace empathy social media cannot automatically create equality without ethical value technology and amplify existing social inequality the society as the real guardian of the woman dignity arises from human value rather than machine family equal family environment environment begin at home family should ensure equal education equal inheritance equal nutrition equal decision parents safe gender society as the guardian of the woman dignity ବୁଝିଲା ନା gender society education ବୁଝିଲା gender sensitive education ନା ହଉଛି constitutional value respect equality consent share responsibility ଏମିତି ପଏଣ୍ଟ ଦେଇତେ ଲେଖିବେ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ବୁଝିଲା ନା ତାକୁ ହଉଛି ପୁରା ହଉଛି descript way ରେ ଲେଖିବେ ତାପରେ ହଉଛି education must eliminate stereotype rather than କେମିତି underline word ଗାରେ କରିବେ କିନ୍ତୁ ହଉଛି ଏମିତି ସବୁ ହଉଛି ପଏଣ୍ଟ କରିକି strong legal and institutional framework ବି ଲେଖିବେ ନାହିଁ in strong legal and institutional support ତାକୁ ଗାର କରିଦେବେ ସେଇଠୁ ଜଣା ପଡିବ ଯେ ଇଏ ହଉଛି ହେଡିଙ୍ଗ ବୁଝିଲା ନା ସବୁ ହେଡିଙ୍ଗ ଗୁଡାକ ଛୋଟ କରିବେ ଲଙ୍ଗ ହେଡିଙ୍ଗ ଟାକୁ ପୁରା ଲଙ୍ଗ ରେ ଦେଇଥିବେ ବୁଝିଲା ନା ଆଣ୍ଡ ଲ ଅଫ ପାରାଗ୍ରାଫ ଲେଖିବେ ଏଇଠି ରହିଲା ହେଡିଙ୍ଗ ପୁରା ଦେଇଦେଲେ ବୁଝିଲା ନା ହେଡିଙ୍ଗ ଟା ଦେଇଦେଲା ପରେ ଏଠି ଲେଖିଲେ ତାପରେ ହଉଛି ସବ ହେଡିଙ୍ଗ ଏଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ ଏଠୁ ଏମିତି ନା ଏଣ୍ଡ ହେଇଯିବ ବୁଝିଲା ନା ଦୁଇଟା ପାରାଗ୍ରାଫ ଲେଖିପାରିବେ ନହେଲେ ତିନିଟା ପାରାଗ୍ରାଫ ଲେଖିପାରିବେ ବୁଝିଲା ନା ଏମିତି ଲେଖିପାରିବେ ଛୋଟ impact legislation protection of women from domestic violence sexual harassment at workplace POX Act ବୁଝିଲା ନା POX Act 2013 ରେ ଆସିଛି ବୁଝିଲା ନା criminal law admitted both guideline ବୁଝିଲା ନା economic and potential inclusion ଲେଖିପାରିବେ ନା ହଉଛି women and potential inclusion ଲେଖିପାରିବେ women dignity grow when society recognize equal decision and equal ତାପରେ ହଉଛି greater participation in need parliament panchayat cooperative institution and judiciary policy and civil service the women reservation act is in fact step forward political inclusion changing cultural narrative ଯେମିତି ହଉଛି recently ହଉଛି ସାବରିମାଳା ରେ ହଉଛି ଟେମ୍ପଲ ରେ ହଉଛି କଣ ହଉଛି ନା ହଉଛି ଏଣ୍ଟ୍ରି ପାଇଁ ରଖାଯାଇଛି ବୁଝିଲା ନା ସିନେମା ଲିଟରେଚର community leaders should celebrate women as a leader innovator scientist entrepreneur administrator rather than reinforce stereotype the way forward integrating technology with social reform a holistic approach should combine technological innovation with social transformation key measure ହଉଛି promote universal digital literacy among women bridge the rural and urban digital divide strengthen cyber safety and data protection ensure women in STEM and education mainstream gender budgeting and gender sensitive policy making engage men and boys gender equality campaign building ethical a sensitive free gender basis strengthen mission safety digital and skill initiative for women Dr. B.R. Ambedkar observation I measure the progress of women by degree of progress with women have achieved ବୁଝିଲା ନା ଏଇ ସବୁ ଲେଖି ପାରିବେ quotation I measure the progress of a community by the degree of progress which women have achieved ଏଇ କଥା conclusion ରେ ବି ଲେଖି ପାରିବେ ନା ହଉଛି technology is powerful tool it's often door create opportunity and expand possibility yet dignity is not
promoted algorithm, smartphone, artificial intelligence. It emerged from respect, equality, compassion and social justice embodiment in society. ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି SDG ଲେଖିପାରିବା SDG 5 gender equality, SDG 10 ଅଛି reduce inequality କରିପାରିବା ବୁଝିଗଲା ନା ତ future society technology amplify women capability while self value protect life dignity. Indian constitution vision liberty, equality and fraternity together with sustainable development. Goal 5 gender equality demand us empowerment meaningful only the accompanied by the dignity. Ultimately technology may provide me with wings but only society can ensure to their equality and respected. थैंक यू फ्रेंड रही मुझे जानूँ भिडियोटी आपको निहाती हेल्पफुल कर रही सांग मैंने थैंक यू।